Let's start chapter 13. First part is very basic statistical description of data. So statistics के basic steps कैसे कैसे data collect होता है, collection के अलग अलग variations और वो सारी चीजें. So काफी सारा clear ही है. You have to mark a few things, write down a few things. rather हम notes ही proper बना के रखेंगे उस chapter के भी. And then we'll start with sampling, which is the unit. So unit 1 पे हो जाएगा, unit 2 पे हो जाएगा, chapter में finish हो जाएगा. ठीक है. काफी दोनों भी यूनिट्स काफी सारा थ्योरेटिकल है. सैम्पलिंग में बहुत सारी थियरी है एंड ये वाला चैप्टर भी काफी सारी थियरी है, प्रैक्टिकल थियरी है. सो नथिंग के ऐसे कुछ लर्निंग पार्ट है. You just have to remember a few things. Let's start with unit 1, which is statistical description of data. Now, done enough. So करेगा. पहले तो सबसे पहले statistics का base is divided into 5 steps. First step is always collection of data. Statistics is all calculation and numbers and everything, correct? But पहले नंबर आए कहाँ से? तो पहले डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा. ये समझ में आ रहा है? So first step is always collection of data. डेटा को कलेक्ट करने के मेन दो सोर्सेस दिए होंगे. एक है प्राइमरी सोर्स और एक है सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स का मीनिंग क्या? कि जिसको डेटा को यूज करना है. लेट्स से आई वांट टू यूज द डेटा, उसके ऊपर कैलकुलेशन वगैरह एनालिसिस वगैरह सब कुछ मुझे करना है. सो डेटा का कलेक्शन भी किसने करना चाहिए? मैंने. आई विल अपॉइंट माय रिप्रेजेंटेटिव्स और वो जाके डेटा कलेक्ट करेंगे या फिर मैं खुद जाके डेटा कलेक्ट करूंगा. सो दैट इज प्राइमरी सोर्स. दूसरा है सेकेंडरी सोर्स. फर्स्ट इज प्राइमरी तो दूसरा ऑब्वियसली सेकेंडरी. सेकेंडरी सोर्स में क्या है कि किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने अगर ऑलरेडी डेटा कलेक्ट किया हुआ है एंड इफ आई एम हैप्पी विद दैट डेटा कि मुझे वही डेटा काम में आ जाएगा. जैसे गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्लानिंग एंड एस्टिमेशंस और डेटा कलेक्ट करते हैं. जैसे मेक द सेंसस है, एवरी 10 इयर्स में बड़ा वाला डेटा कलेक्शन का पूरा प्रोसेस होता है उनका. एक एक महीना दो महीना पूरा वही चलते रहता है गवर्नमेंट का. सो ऐसे कोई डेटा एनजीओ होते हैं जो डेटा कलेक्ट करते हैं या सोशल वेलफेयर वाले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो रिक्वायरमेंट क्या है फाइनली पब्लिक की, सोशल रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सब के पीछे डेटा बहुत सारा कलेक्ट होते रहता है. स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बहुत सारे जो उनका काम ही है कि डेटा कलेक्ट करो, उसके ऊपर एनालिसिस करो, वो एनालिसिस भेज दो. ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. सो मे बी वी कैन कलेक्ट दीज द डेटा व्हिच वी वांट फ्रॉम दीज ऑर्गेनाइजेशंस. एक तो गवर्नमेंट या एनजीओज या सोशल वेलफेयर या ऐसे कोई स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो डेटा भेजने के लिए तैयार है. वी कैन कलेक्ट द डेटा फ्रॉम देम. सो मैंने कोई लोगों को अपॉइंट किया कि डेटा कलेक्ट करने के लिए. डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, वो मैं सिर्फ परचेस कर रहा हूं या फिर बोरो कर रहा हूं या फिर ले रहा हूं. कोई समझ में आया? सो दिस इज सेकेंडरी सोर्स. सो कलेक्शन ऑफ डेटा, उसमें दो प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. एक बार डेटा मिल जाए तो डेटा पे फर्दर सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग होगा. एक बार डेटा मैंने कलेक्ट कर लिया, बहुत बार ऐसे होता है कि जो मुझे रिस्पॉन्स चाहिए था, जो मैंने क्वेश्चन का मीनिंग रखा था, सामने वाले ने कुछ अलग ही इंटरप्रेट किया और रिस्पॉन्स कुछ अलग ही दे दिया. कभी कभी ऐसा होता है कि जो सोर्स है जिससे मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ वो रिलायबल ही नहीं है. लेट्स से मैं खुद गया अलग अलग लोगों से मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, कोई के बीच में लोग तो उनके रिस्पॉन्स देख के मुझे समझ में आया कुछ तो गोल गोल घुमा के आंसर दे रहे हैं, तो इनका डेटा कोई रिलायबल नहीं है. उनके फेवरेबल में जो रहेगा उसके हिसाब से आंसर दे रहे हैं. सो इनसे डेटा कलेक्ट करना रिलायबल नहीं है. सो अनरिलायबल सोर्सेस या फिर इररिलेवेंट डेटा, जो मुझे कलेक्ट करना था वो तो मिला नहीं, कुछ दूसरा ही मिल रहा है. जो इररिलेवेंट डेटा है, जो अनरिलायबल सोर्सेस है, ऐसे वाला डेटा में फिल्टर लगा दूंगा. ऐसे वाले डेटा को मैं साइड में हटा दूंगा. जो इररिलेवेंट है, जो अनरिलायबल है, वो सारा हटा देंगे. जो रेलेवेंट है उतना ही हमारे पास रखना है. दिस इज योर सेकंड स्टेप व्हिच इज सॉर्टिंग ऑफ डेटा. बोलो समझ में आया? थर्ड स्टेप इज कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा. डेटा को अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग फीचर्स के हिसाब से कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करो. हो सकता है जेंडर कैन बी वन कैटेगरी, मेल फीमेल, मेल रिस्पॉन्सेस अलग, फीमेल रिस्पॉन्सेस अलग. हो सकता है एज वाइज मैंने रिस्पॉन्सेस को स्प्लिट कर दिया. माइनर्स का अलग, लेस देन 18 वालों का अलग, 18 टू 30 वर्किंग पॉपुलेशन का अलग, 30 टू 60 लेट्स से हायर वर्किंग क्लास, वहां पे क्योंकि ऑलरेडी ग्रोथ हो चुका है. 30 टू 60 उन वाले वर्किंग क्लास का डेटा मैंने अलग किया. 60 के अलावा लेट्स से मोर देन सीनियर सिटीजंस या रिटायर्ड पॉपुलेशन का डेटा मैंने अलग कर दिया. सो एज वाइज भी मैं डेटा को कैटेगरी में स्प्लिट कर सकता हूँ. हो सकता है एरिया वाइज में स्प्लिट कर दूं. महाराष्ट्र का डेटा अलग, एमपी का डेटा अलग, गुजरात का अलग,
यूपी का अलग, कश्मीर का अलग, ऐसे मैंने डेटा एरिया वाइज भी मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। सो कैटेगरीज करो, डेटा को कैटेगराइज करो एज पर आर पर्पस। अपने पर्पस के हिसाब से डेटा के अलग अलग कैटेगरीज बनाओ, उसके क्लासिफिकेशंस करो। बोलो समझ में आया? दिस इज योर थर्ड स्टेप व्हिच इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। बोलो समझ में आया? फोर्थ स्टेप इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, सॉर्ट कर लिया, क्लासिफाई भी कर लिया, अब ये डेटा को मैंने प्रेजेंट करते आना चाहिए मुझे। There are various ways. One is textual presentation, then tabular presentation, and third is graphical presentation. So तीन types of presentations है। Textual मतलब क्या? पैराग्राफ लो, पैराग्राफ में एक एक डेटा लिखते जाओ, प्रॉपर डिटेल लिखो कि इतने इतने मेल से मैंने डेटा कलेक्ट किया, उसमें से इतने लोग इस चीज के फेवरेबल में है, इस चीज के अनफेवरेबल में है, जो भी डेटा जिस भी चीज के लिए कलेक्ट करना है। समझ में आ रहा है? सो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखो। That is one way of presenting data. Not so effective, पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने नहीं पड़ता, जो है वो फटाफट से लिखते गए। बोलो समझ में? नॉट सो इफेक्टिव बिकॉज डेटा उसमें से इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं ना, तो पूरा पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा ना। बट डिटेल हम दे सकते हैं, उसमें और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स डालने हैं, डिटेलिंग कुछ देना है कि नोट डाल दिया कि ये वाला जब डेटा कलेक्ट कर रहा था तब सिनारियो कुछ अलग था, बीच में कोविड आ गया था, तो maybe responses were influenced by the current scenario। ऐसे हम एक्स्ट्रा डिटेलिंग इंफॉर्मेशन उसमें दे सकते हैं। सब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहेगा, लेकिन उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। वन इज ग्राफिक, सॉरी वन इज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। समझ में आया ये वाला? सेकंड इज टैबुलर प्रेजेंटेशन, जो हम कब से कर ही रहे हैं। टेबल से कौन सारे कैलकुलेशंस करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के आगे के जितने भी चैप्टर हमने किए मोस्टली क्या रहता है, टेबल दिया रहता है, एक्स दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी दी रहती है, फ्रीक्वेंसी टेबल्स होते हैं, उसमें से फिर अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं। करेक्ट? सो टैबुलर प्रेजेंटेशन यू नो, रोज एंड कॉलम्स में स्प्लिट करो और उसके हिसाब से डेटा को फिलअप करो। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में सब कुछ आ जाता है, बार चार्ट्स, बार डायग्राम्स, पाई चार्ट्स, लाइन डायग्राम्स, ग्राफ्स, ये एवरीथिंग विल बी graphical presentation। जहाँ पे shapes and figures हम use कर रहे हैं to present the data। So it is very catchy, plus information बहुत easily उसमें से मिल सकता है। Comparison के लिए बहुत easy हो जाता है, एक बार डायग्राम, दूसरा बार डायग्राम, तीसरा बार डायग्राम, ग्रोथ इजीली समझ में आ जाती है। हमको ज्यादा नंबर्स पे फोकस नहीं करना पड़ता, वी कैन जस्ट सी द पैटर्न। बोलो समझ में आया? सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आर वेरी यूजफुल फॉर comparison and easy access of data basically। So these three are presentation of data. One is textual, second is tabular, and third is graphical। Graphical में बहुत सारे variations आते हैं, bar diagrams, histograms, line diagrams, frequency polygon, then pie charts, और भी स्टार्टिंग में कुछ बोला था, सारी बेसिकली लाइन डायग्राम्स और मल्टीपल लाइन चार्ट्स। तुमने अगर अभी आईपीएल वगैरह देख रहे हो, क्रिकेट को देखते हो तुम, लाइन चार्ट्स आते हैं, मुंबई मुंबई इंडियंस ने कैसे स्कोर रनिंग रनिंग का उनका पैटर्न, और फिर दूसरे, हाँ सॉरी ऐसे ही जाना चाहिए मुंबई से। सुनो बोला हम क्या कर रहे हैं, ठीक है राजस्थान का चर्चा कीजिए। आज खुश खुश रहने दो उनको, क्या है आएंगे मुंबई वापस, साथ मुंबई की आदत होती है, सारे आते बात करते हैं। एनीवेज पॉइंट बी, वहां पे टीम का स्कोर का लाइन चार्ट दिखता है तुमको रन रेट के हिसाब से या ओवर वाइज तुम्हारे स्कोर के हिसाब से, और फिर दूसरे टीम का भी आता है और दिखता है कि वो इसके ऊपर मतलब उनका रन रेट बेटर है या लोअर है या कितना कैचअप करना पड़ेगा, ये सारा इजीली समझ में आ जाता है। दोस आर नथिंग बट लाइन चार्ट्स। वैसे ही डेटा को हम अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। एनीवेज दैट वाज योर फोर्थ स्टेप व्हिच इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एक बार डेटा प्रेजेंट हो जाए, फिफ्थ स्टेप इज एनालिसिस ऑफ डेटा। फिर पूरा जो आगे के चैप्टर्स, फिर उसके ऊपर कैलकुलेशंस करो, अलग अलग स्टैटिस्टिक्स निकालो, मीन मीडियन मोड, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, रिस्क कितना है, फिर कोरिलेशन रिग्रेशन, दो चीजें होगी तो कोरिलेशन रिग्रेशन देखो, आगे की प्रोबेबिलिटीज, ये सारे के सारे क्या है, एनालिसिस ऑफ डेटा। समझ में आ रहा है? सो स्टैटिस्टिक्स इज डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स, उसमें से फर्स्ट 4 पार्ट्स आर थ्योरेटिकल जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, फिफ्थ पार्ट इज एनालिसिस ऑफ डेटा जो हमने अलग अलग चैप्टर्स में, वो भी लिमिटेड है तुमको फाउंडेशन में, और आगे जाके तुमको और भी थोड़े बहुत सारे नए नए कंसेप्ट्स या नई नई चीजें सीखने मिलेगी, व्हिच इज नथिंग बट एनालिसिस ऑफ डेटा ओनली। बोलो समझ में आया? सो अभी तक जो हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे दैट वाज डायरेक्टली द फिफ्थ स्टेप, कि डेटा को एनालाइज कैसे करना है। अब उसके पीछे जो 4 स्टेप्स है, पहले कलेक्शन, फिर सॉर्टिंग, फिर क्लासिफिकेशन एंड देन प्रेजेंटेशन, ये 4 स्टेप्स के बारे में जो थियरी है कि क्या क्या चीजें होती है, कौन सा एडवांटेजेस है, कौन से डिसएडवांटेजेस है,
कौन से स्टेप में, कौन से मेथड में, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे देखनी। बोलो समझ में आया? ओवरऑल व्यू पूरे चैप्टर का क्या होने वाला है समझ में आया? लेट्स स्टार्ट। तो थोड़ा रीडिंग रहेगा, इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मैं मार्क करवाऊंगा, वो हमको लिख भी लेनी है, एंड उसके ऊपर एमसीक्यूज भी हम फिर बाद में देखेंगे। एनीवेज चलो, सो लॉट्स ऑफ रीडिंग एंड लॉट्स ऑफ राइटिंग आल्सो, और मार्किंग भी। हेडिंग दे दो फॉर्मूला बुक में, साइड बाय साइड हम लिखते जाएंगे। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। क्या बोला? स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। चलो करें स्टार्ट। ध्यान सबका मॉड्यूल की तरफ। The modern development in the field of not only management, commerce, economics, social science, mathematics, and so on, but also in our life, like public services, defense, banking, insurance sector, tourism, and hospitality, police and military, etc., are dependent on a particular subject known as statistics. So, उन्होंने बोला there are so many fields which are dependent on statistics. क्योंकि फाइनली कोई भी फील्ड में कोई भी डिसीजन तुमको लेना है, तो फाइनली उनके फिगर्स कैलकुलेशंस करके फिर फ्यूचर का एक प्रेडिक्शन करके हम आगे के डिसीजंस लेंगे। दैट्स हाउ एनी इंडस्ट्री ग्रोस, कि फ्यूचर का प्रॉपर प्रेडिक्शन करो, उसके हिसाब से क्या डिमांड क्या सप्लाई रहेगी, उसके हिसाब से ही आगे के प्रोडक्शन ग्रोथ ऑफ एनी इंडस्ट्री विल हैपन। सर वही उन्होंने बोला है स्टैटिस्टिक्स हर जगह पे अप्लाई होता है, एवरी अदर इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन स्टैटिस्टिक्स। Statistics does play a vital role in enriching a specific domain by collecting data in that field, analyzing the data by applying various statistical techniques, and finally making statistical inferences about the domain. In the present world, statistics has almost a universal application. Our government applies statistics to make the economic planning in an effective and pragmatic way. The businessman plans and expands their horizons of business on the basis of analysis of feedback data. Political parties try to impress the general public by presenting the statistics of their performance. ये तो होते रहता है, और अभी अभी में तो बहुत ज्यादा होने वाला है। कैंपेन्स चलते रहेंगे, कैंपेन्स में ये सारे फिगर्स छाड़ते रहेंगे कि हमारे टाइम पे ऐसे था, अभी ऐसा है, ये बोलेंगे हमने इतना इम्प्रूवमेंट किया, पहले ऐसे था, ये सारे चलते रहेगा। हम और ये और वो टाइम तुमको पता है क्या चल रहा है। Most of the research scholars of today also apply statistics to present their research papers in an authoritative manner. Yes, the figures are easily understandable and figures are very definitive. हाँ ये इतना है, फिगर मिल जाए, हम अप्रोक्सीमेटली नहीं बोलते, कोई फिगर कैलकुलेट करके दे दे तो इट बिकम्स वेरी ऑथोरिटेटिव। हाँ कि इसने इतना इतना फिगर कैलकुलेशन सब कुछ डेटा एनालाइज करके ये सारी चीजें निकाली हुई है, इट बिकम्स मोर रिलायबल। समझ में आ रहा है? Thus, the list of people using statistics goes on and on and on. Due to these factors, it is necessary to study the subject of statistics in an objective manner. पूरा पैराग्राफ कट कर दो, कोई काम नहीं। ठीक है, next, history of statistics. Going through the history of ancient period and also that of medieval period, we do find the mention of statistics in many countries. However, there remains a question mark about the origin of the word statistics. लोगों को अभी तक पता नहीं है, क्योंकि it is so widely used कि हर कोई यूज करता है, तो इसका पहले ओरिजिन हुआ है, कहां से ये वर्ड आया है, किसी को पता नहीं है। Almost everyone uses it. ऐसा है। So one view is that statistics is originated from the Latin word status. ये हमको लिख लेने सारे, फटाफट से फॉर्मूला खोलो, शॉर्ट में लिखेंगे। Origin of word statistics. Ready go? Origin of word statistics. So first Latin word, arrow करके लिखो status. Status. Latin word कौन सा है? Status. According to another school of thought, it had its origin in the Italian word statista. So Italian word statista.
क्योंकि ये मैच द पेयर्स में आता है, पता नहीं क्यों इसका अभी आंसर। हाँ मतलब कौन से पेयर्स राइट है, चार ऑप्शन देंगे, चारों में मैच द पेयर्स दिया रहेगा, ओरिजिन और ये। एनीवेज इटालियन वर्ड कौन सा है? पास्ता जैसे स्टैटिस्टा, याद रख लो। हाँ इटालियन पास्ता स्टैटिस्टा। Next, some scholars believe that the German word statistic was later changed to statistics. Swastik, हाँ. हिटलर 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 कहाँ से था? सर ए स्वस्तिक जैसे ना, तेरे को क्या फर्क पड़ता है, स्वस्तिक क्या नहीं है, याद रखो। स्वस्तिक जैसे statistic was later changed to statistics. And another suggestion is that French word statistique, so ये सारे origins तुमको याद रखने हैं, Latin, Italian, German and French. लिखे चारों वर्ड्स लिखे। तो फर्स्ट स्वस्तिक स्टैटिस्टिक वर्ड का ओरिजिन हम देख रहे हैं, चारों वर्ड्स क्लियर से समझ में आया। In those days, statistics was analogous to state, or to be more precise, the data that are collected and maintained for the welfare of the people belonging to state. So more related to economics only. We are thankful to Kautilya, who had kept a record of births and deaths, as well as some other precious records in his famous book Arthashastra during Chandragupta's reign in the 4th century BC. During the reign of Akbar in the 16th century AD, we find statistical records on agriculture in N.E. Akbari, written by Abu Fazl. No use इसके ऊपर कुछ पूछा है नहीं. Referring to Egypt, the first census was conducted by the pharaoh during 300 BC to 2000 BC. उनको की बात कर रहे हैं. तो बस हिस्ट्री बोल रहे हो, कब कब कैसे कैसे यूज हुआ, किसने कहा पे क्या लिखा हुआ है, नॉट मच यूजफुल. नेक्स्ट लिखो डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, रेडी दो. सेकंड पॉइंट डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पहले रीड कर लेते हैं. We may define statistics either in singular sense or in plural sense. Statistics, when used as a plural noun, may be defined as data, qualitative as well as quantitative, that are collected usually with a view of having statistical analysis. However, statistics, when used as a singular noun, may be defined as the scientific method that is employed for collecting, analyzing, and presenting data, leading finally to drawing statistical inferences about some important characteristics. It means it is science of counting or science of averages. So दो सेंस दिए उन्होंने, सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस. सिंगुलर सेंस मतलब क्या, इसके स्टैटिस्टिक्स निकालो, इसके स्टैटिस्टिक्स क्या है, मुंबई इंडियंस के स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये सिंगुलर सेंस हो. समझ में आ रहा है? बेसिकली काउंटिंग एंड नंबर्स एंड फिगर्स एंड कैलकुलेशंस इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स. प्लूरल सेंस में एज अ होल सब्जेक्ट हम सोच सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये प्लूरल सेंस हो गया. समझ में आ रहा है? Statistics can be used in a singular sense as well as a plural sense. Plural sense में it is a bigger picture. वहाँ पे हम सिर्फ calculations और वो नहीं देखते, पूरा data का collection, processing और how to use that statistics, how to convert data into information, everything is included in statistics as a whole subject. Quantitative as well as qualitative. Quantitative मतलब calculations हो गया, qualitative मतलब बाकी सारी चीजें हो गई. उसका यूज, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका इंटरप्रिटेशन, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल सेंस. सिंगुलर सेंस में देखा जाए तो बस कैलकुलेशंस एंड फिगर्स एंड नंबर्स आर इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स. समझ में? दोनों चीजें लिख लेंगे, राइट ऑन. सिंगुलर सेंस एरो करके लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसमें पहला सिंगुलर सेंस एरो करके लिखेंगे क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा. क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा. सॉरी ये प्लूरल सेंस था, तो सॉरी सिंगुलर नहीं, plural sense. Plural sense, qualitative as well as quantitative data. फिर लिखो singular sense.
Scientific method. Scientific method of collecting, presenting, and analyzing data. Scientific method of collecting, analyzing, and presenting data. उसी के नीचे लिखो लो साइंस ऑफ काउंटिंग और साइंस ऑफ एवरेजेस ये सिंगुलर सेंस में आएगा साइंटिफिक मेथड ऑफ कलेक्टिंग एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा और उसके नीचे लिखना है साइंस ऑफ काउंटिंग साइंस ऑफ एवरेजेस चलो हुआ next application of statistics among various applications of statistics let us confine our discussions to the fields of economics business management and commerce and industry so उसने again theoretical चीजें दी होगी मेन हेडिंग्स तुमको ध्यान रखना है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में ये नोट बाद में लिखिए Modern developments in economics have the roots in statistics. In fact, economics and statistics are closely associated. एक field ही होता है econometrics, which is economics and statistics. So, क्योंकि economics में फाइनली तुम ये सारी ग्राफ्स देखते हो, especially माइक्रो इकोनॉमिक्स में. माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये law of demand, supply, कर्व्स और यहाँ से इंटरसेक्शन और हमारा अलग अलग जो थियरम्स उसमें सीखे प्लस उसमें मार्जिनल यूटिलिटी फाइनली उनके डेरिवेशंस आर नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स ओनली फिगर्स के साथ ही तुम अलग अलग चीजें खेल रहे हो टाइम सीरीज एनालिसिस इंडेक्स नंबर्स डिमांड एनालिसिस एक्सेट्रा आर सम ओवरलैपिंग एरियाज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स In this connection, we may also mention econometrics, a branch of economics that interact with statistics. So econometrics क्या है? Branch of economics that interacts with statistics. ये definition लिख लो सिर्फ एक जगह पे. Heading देखो application of statistics. Application of statistics. First उसमें लिखेंगे economics. Application of statistics उसमें first आएगा economics. इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट इकोनोमेट्रिक्स इतना पार्ट इकोनोमेट्रिक्स branch of economics that interact with statistics चलो आगे तो फास्ट फास्ट लिखो वो लिखे वो अभी conducting socio-economic surveys and analyzing the data derived from it are made with the help of different statistical methods. Regression analysis, one of the numerous applications of statistics, plays a key role in economics for making future projection of demand of goods, sales, prices, quantities, etc., which are all ingredients of economic planning. Future का prediction कर रहे हो तो हमने देखा है regression analysis हम पूरी equation ही बनाते one variable dependent on another और फिर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका प्रेडिक्शन करो उसके हिसाब से डिपेंडेंट वेरिएबल का भी प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं स्पेशली कंट्रोलेबल फैक्टर्स एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जैसे एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा करना है ये मेरे हाथ में है अगर उस एडवर्टाइजमेंट से फायदा कितना होगा सेल्स पे इसका एक हम रिलेशन बना के सेल्स का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अगर हमने 80,000 स्पेंड किया एडवर्टाइजमेंट पे तो सेल्स कितना होगा अगर हमने लेट्स से 1.5 लाख किया तो सेल्स कितना होगा तो इसका एक रिग्रेशन एनालिसिस से हमको प्रेडिक्शन करते हैं बनता है और समझ में anyways next is business management gone are the days when the managers used to make decisions on the basis of hunches intuition or trial and error लग रहा है मुझे कि पड़ेगा ले लो gone are the days ऐसे उन्होंने बोला समझ आ रहा है so just on the basis of intuition अभी कोई prediction करके decision लेता नहीं है they use proper statistics they have proper figures they have proper backing statistical backing और उसके हिसाब से डिसीजन आगे लिया जाता है nowadays because of the never ending complexity in the business and industry environment most of the decision making process rely upon different quantitative techniques which could be described as a combination of statistical methods and operation research techniques so far as statistics is concerned
Inferences about the universe from the knowledge of a part of it, known as sample, plays an important role in the development of certain criteria. उन्होंने भी बोला है कि अब पॉपुलेशन इतना बड़ा है, नॉट जस्ट लोगों का, डेटा का पॉपुलेशन इतना बड़ा है, इतना ज्यादा डेटा है कि हर एक डेटा के बारे में हम स्टडी नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, उस डेटा में से छोटा सा सैंपल उठाते हैं, सैंपल के बारे में स्टडी करते हैं, एंड वी अज्यूम कि जो सैंपल में हो रहा है वो पॉपुलेशन नंबर है। बोल समझ में आया? ऑडिट करने तुम जाओगे कभी आगे जाके, वहां पे भी यही होता है। अब कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन के दिन के 1000 बिल होते हैं, अब साल भर में कितने बिल्स रहेंगे, हर एक बिल एक चेक करोगे क्या? बिल इज वन थिंग, परचेस बिल्स, अलग अलग एक्सपेंस बिल्स, देन अलग अलग सेल्स बिल्स, ऐसे हर एक चीज में बहुत सारी चीजें होती है जो हमको चेक करना होता है। अब हर एक चीज हम चेक कर ही नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक ईच एंड एवरी आइटम, ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग। तो हम क्या करते हैं, रैंडम सैंपल्स ले, इस महीने के ये 15 दिन ले, उस महीने के ये 10 दिन ले, उस महीने के ये 5 दिन लो, ऐसे 10-15 अलग अलग सिलेक्ट करके हम रैंडम डेज सिलेक्ट करते हैं और उनको चेक करते हैं। एंड देन वी अज्यूम कि सैंपल में कुछ गड़बड़ नहीं है तो पूरे पॉपुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं। पॉपुलेशन एंड सैंपल, ये दो वर्ड समझ में आ रहे हैं? द होल डेटा इज द पॉपुलेशन ऑफ डेटा। द डेटा व्हिच वी आर स्टडीइंग ऑन, जिस जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया पॉपुलेशन में से, छोटा सा एक सैंपल उठाया, बोलो समझ में आया? तो उसको हम बोलते हैं सैंपलिंग। फाइनली जब हम बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं, कोई बीमारी है, कौन सी बीमारी है, तो हम क्या निकालते हैं? ब्लड सैंपल। उसको बोलते हैं क्या है? ब्लड सैंपल। क्यों? पूरे बॉडी का ब्लड निकाल सकते हैं क्या? अगर वो सैंपल में कुछ गड़बड़ है तो पूरे बॉडी में गड़बड़ है, अगर सैंपल में गड़बड़ नहीं है तो हम अज्यूम करते हैं कि पूरे बॉडी में गड़बड़ नहीं है। इसलिए जो तुम्हारे टेस्ट होते हैं उसकी रेंज भी होती है, हमेशा स्पेसिफिक नहीं होता है, इतना होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो उतना रेंज क्यों दिया रहता है? बिकॉज जो हम सैंपल में से निकाल रहे हैं वो एक्चुअल में पूरे बॉडी में वेरिएशन आ सकता है। इतने से ब्लड का सैंपल हम निकालते हैं और पूरे बॉडी में कितना ब्लड है, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि हमने जो सैंपल उठाया उसमें वेरिएशन हो सकता है, उसके ऊपर जो टेस्टिंग किया है और एक्चुअल में पूरे ब्लड में अगर टेस्टिंग करें तो देयर कैन बी सम वेरिएशन। इसलिए टेस्ट के रिजल्ट में वो हमेशा रेंज में देते हैं, समझ में आ रहा है कि इतना इतना होना चाहिए, फ्रॉम दिस टू दिस, इतना वेरिएशन तो होते रहता है। समझ में आ रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है? एनीवे, सो दैट इज आल्सो नथिंग बट सैंपलिंग ओनली। बस वहां पे ब्लड का सैंपल हो रहा है, यहाँ पे हम डेटा का सैंपल ले रहे हैं। अभी डेटा भी पूरा का पूरा स्टडी किया नहीं जा सकता, इसलिए हम सैंपल लेते हैं। सैंपलिंग इज नथिंग बट दिस थिंग ओनली, दिस प्रोसेस इज नोन एज सैंपलिंग। फिर उसके बारे में और एनालिसिस हम डिटेल में करेंगे चैप्टर में। यहाँ पे भी वही बोला उन्होंने, कहा गया उसकी स्टेटमेंट नहीं। हाँ, so far as statistics is concerned, inferences about the universe मतलब ये population from the knowledge of a part of it मतलब ये sample known as sample plays an important role in the development of certain criteria. So हर जगह पे स्टडी करते हैं और हम ये करते हैं, पूरे यूनिवर्स या पूरे पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते, उसमें से एक पार्ट को उठाते हैं और उस सैंपल को स्टडी करते हैं। Statistical decisions. Statistical decision theory is another concept, is another component of statistics that focuses on the analysis of complicated business strategies with a list of alternatives, their merits as well as events. फालतू theory point है, कोई काम का नहीं है। So इसकी सिर्फ हेडिंग देना, इसमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं लिख रहे, हेडिंग दे दो सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट। हाँ, सिर्फ इतना लिख सकते हो शॉर्ट में, डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन statistical inferences। बिजनेस मैनेजमेंट में सिंपल सा एक पॉइंट लिखेंगे, डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस। जो हम अलग अलग डिसीजंस ले रहे हैं रैंडमली नहीं लेते, हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके उसके ऊपर जो इन्फरेंस या कंक्लूजंस बना रहे हैं उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। समझ में आया? थर्ड दिया उन्होंने स्टैटिस्टिक्स इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ध्यान है सबका? In this age of cutthroat competition, like the modern managers, the industrialists, and the businessmen are expanding their horizons of industries and businesses with the help of statistical procedures. Data on previous sales, raw materials, wages, and salaries, products of identical nature of other factories, etc., are collected, analyzed, and experts are consulted in order to maximize profits. हम पहले से एक प्लान करते हैं कि इतना इतना खर्चे में इतने इतने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, खर्चा लग गया कुछ और ही, एक्चुअल में लगते 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 खर्चा कुछ
और ये हो गया। तो जो हमारा एस्टिमेटेड खर्चा था और जो एक्चुअल में खर्चा लगा इसका एनालिसिस होगा। क्यों एक्स्ट्रा लगा? क्या जिस रेट में हम रॉ मटेरियल को खरीदने वाले थे वो रेट ही बढ़ चुका है? इज दैट द रीजन? और एल्स क्या जितना रॉ मटेरियल हमको लगना चाहिए था उससे ज्यादा लग रहा है, मतलब कि वेस्टेज ज्यादा हो रहा है? हमने सोचा था कोई एक प्रोडक्ट बनाने में लेट्स से 2 केजीज ऑफ प्लास्टिक लगेगा, लेकिन लगता है 2.2 केजीज लग रहा है एक प्रोडक्ट 1 यूनिट के पीछे। सो 0.2 केजीज एक्स्ट्रा लग रहा है। इज दैट द रीजन ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट? इज द रीजन की एफिशिएंसी जो हमारे एम्प्लॉयज की उनकी एफिशिएंसी उतनी नहीं है, जो काम 6 घंटे में होना चाहिए वो 8 घंटे लगा रहे हैं, तो 2 घंटे का एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ रहा है हमको। समझ में आ रहा है? या फिर भी कम काम हो रहा है, जितना डिमांड है उतना हम सप्लाई कर नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि काम नहीं है, कम कर रहे हैं, एफिशिएंसी उनकी पूरी है। ये सब एनालिसिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बोलो समझ में आ रहा है? सो ऐसे सेल्स के बारे में स्टडी करना, रॉ मटेरियल्स, वेजेस, सैलरीज, इन सब के एक एक आइटम के बारे में स्टडी कर लो उनके फिगर्स के रिलेटेड। उससे हमको एक बेटर एनालिसिस होगा और फिर फ्यूचर में हम चेंजेस कर सकते हैं, एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, हमारा एस्टिमेशन पे हम चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? Measures of central tendency and dispersion, correlation and regression analysis, time series analysis, index numbers, sampling, सारे चैप्टर के नाम भी दिए उन्होंने। Statistical quality control are some of the statistical methods employed in commerce and industry. Nothing to write as such, general points and nothing specific. So बस heading दे दो। Third, statistics in commerce and industry. एप्लीकेशन में तीन ही चीजें दी उन्होंने, एक इकोनॉमिक्स, एक बिजनेस मैनेजमेंट और तीसरा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वन ऑफ द मेन यूज फाइनेंस के बारे में उन्होंने कुछ बोला नहीं यहाँ पे, बट फाइनेंस इज अनदर वेरी वास्ट यूज, वास्ट सेक्टर जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। एक्चुअली फाइनेंस इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू मनी। मैं हमेशा से बोलता है मैथ्स रिलेटेड टू मनी इज नथिंग बट फाइनेंस। मैथ्स मतलब क्या है? स्टैटिस्टिक्स से हम देखने वाले हैं। एनीवेज, नेक्स्ट, limitations of statistics. Before applying statistical methods, we must be aware of the following limitations. Statistics deals with the aggregates. An individual to a statistician has no significance except the fact that it is part of the aggregate. As a whole देखा जाता है, एक सिंगल फिगर के ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन किया नहीं जाता, because data is huge. हर एक फिगर के बारे में बहुत ज्यादा सोचोगे तो फिर टाइम भी कंज्यूम होगा, पैसे भी वेस्ट होंगे और एनालिसिस भी प्रॉपर कर नहीं पाओगे। So we work on averages. On an average ही होता है, on an average वो होता है। We work on averages, aggregates. बोले समझ में आ रहा है? We do not work on each and individual figure. So first point लिखेंगे, write down limitations of statistics, heading देना है, next heading। प्लस उल्टा क्यों लिखना पीछे में? Limitations of statistics, next heading आएगा, उसमें first point, it deals with aggregates and not individual figures. It deals with aggregates and not individual figures. Second point लिखो, it is more focused on quantitative data. Second point, it is more focused on quantitative data. Point देखो क्या लिखा है मैंने, statistics is concerned with quantitative data. However, qualitative data can also be converted to quantitative data by providing a numerical description to the corresponding quantitative data. So qualitative data भी हम incorporate कर सकते हैं, लेकिन उसको numbers में convert करना ही पड़ेगा. So we can assign numbers, जैसे हमने स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट किया हुआ है, याद आ रहा है? वहां हम क्या देखते हैं? डिफरेंस रैंक। लेट्स से मैं सिंपल सा एग्जांपल दिया था, ब्यूटी पेशेंट, कोई पेशेंट शो है, अलग अलग परफॉर्मेंस है, उनका क्वेश्चन आंसर राउंड है, अलग अलग चीजें हैं, उनके स्किल्स को हम नंबर्स असाइन करते हैं। क्लियर? लेट्स से फाइनली डिक्लेयरिंग मिस एमएसए, इसी क्या था देखिए, लेट्स से मिस एमएसए हमने कोई कंपटीशन रखी, तो ऑब्वियसली अलग अलग क्वालिटीज उनकी जज की जाएगी। हाउ मच आर दे कॉन्फिडेंट, हाउ दे प्रेजेंट themselves, how they present their thoughts,
हाउ द प्रेजेंट देयर थॉट्स, ये सारी चीजें स्किल्स उनके टेस्ट की जाएगी. अब these skills cannot be counted or measured. We assign numbers, marks देते हैं. मार्क्स are nothing but assigning numbers to performance. समझ में आ रहा है? और फिर उन मार्क्स के बेसिस पे फिर एक एनालिसिस कर सकते. So that is nothing but converting qualitative data into quantitative data. Third, future projections of sales, production, price and quantity, etc. are possible under specific set of conditions. If any of these conditions is violated, projections are likely to be inaccurate. Yes, right on. Third point, future projections. Future projections are based on future projections are based on certain conditions and assumptions. स्टैटिस्टिक्स का एक मेन यूज क्या है कि फ्यूचर का प्रोजेक्शन करना है. बट फ्यूचर का प्रोजेक्शन करते वक्त हम बहुत सारी चीजें अज्यूम कर लेते हैं, या फिर अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, हम कंडीशंस बहुत सारी डाल देते हैं. समटाइम्स दोस कंडीशंस एंड दोस अजम्पशंस मे बी अनरियलिस्टिक. प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होगा या फिर एक्चुअल में होता नहीं है. समझ में आ रहा है? उसी पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे. समटाइम्स दीस कंडीशंस sometimes these conditions and assumptions are unrealistic. Sometimes these assumptions and conditions are unrealistic. Next, the theory of statistical inferences is built upon random sampling. If the rules for random sampling is not strictly adhered to, the conclusion drawn on the basis of these unrepresentative samples would be erroneous. In other words, the expert should be consulted before deciding the sampling scheme. मतलब क्या भी अब जो सैंपल उठा रहे हैं वो कंप्लीटली रैंडम होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी फिक्स्ड रूल या फिक्स्ड बायस कि हाँ चलो पहले 5 दिन के देखेंगे या लास्ट 5 दिन के देखेंगे. उसी में सारा गड़बड़ होती है. अगर किसी कुछ फ्रॉड किया होगा तो तभी क्या होगा. यस दैट कैन बी वन सिनेरियो जहाँ पे तुम उन पे ज्यादा फोकस करो. बट ऐसा नहीं है कि ये सिनेरियो उनको पता नहीं है. अब वो भी सोचेंगे कि ऑडिटर जब चेक करने आता है तो फर्स्ट 5 डेज और लास्ट 5 डेज ही चेक करता है. बीच के डेज तो कुछ चेक नहीं करता है. कुछ गड़बड़ करनी है, फ्रॉड करना है तो बीच के दिनों में करो. तुमको भी पता है. समझ पा रहे हैं? Therefore, there should be some randomness in your sampling selection. अब वो रूल्स क्या होते हैं? हाउ टू सिलेक्ट अ रैंडम सैंपल, व्हाट आर द पैटर्न्स, ये सारी चीजें हम सैम्पलिंग में देखेंगे. सो उन्होंने भी बोला है कि फाइनली बहुत गड़बड़ चल रही है. फाइनली स्टैटिस्टिकल के जो कैलकुलेशंस है तो वी मेक ऑन रैंडम सैंपल्स. फाइनली पूरे डेटा को हम स्टडी कर ही नहीं पाते. उसमें से डेटा का हम सैंपल उठाते हैं और सैंपल के बारे में स्टडी करते हैं. और सैंपल में जो हुआ है हम अज्यूम करते हैं पॉपुलेशन में भी वही होगा. बट ये सैंपल ठीक से तुमको निकालते आना चाहिए. अगर सैंपलिंग ही तुमने गलत किया है तो फिर तुम्हारे इन्फरेंसेस या कंक्लूजन्स भी गलत होने वाले, बायस्ड रहने वाले. समझ में आया? फोर्थ पॉइंट हम लिखिए. स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स आर मेड statistical conclusions are made on random samples. Statistical inferences are made on random samples. However, if the samples are biased, conclusions can be erroneous. Erroneous मतलब गलत. They can include errors. Conclusions can be erroneous. Word बोल में है. You want? So short में मैं पॉइंट लिखिए. Here, अब our main first step पे आते हैं which is collection of data. मैंने 5 steps बोले इसमें से first step is collection of data. चलो यहाँ तक हुआ है सबका लिख के. Everything properly noted. We may define data as quantitative information about some particular characteristics under consideration. Although a distinction can be made between a qualitative characteristic and a quantitative characteristic, but so far
As the statistical analysis of the characteristic is concerned, we need to convert qualitative information to quantitative information by providing a numerical description to given कैरेक्टरिस्टिक्स सो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो स्टैटिस्टिक्स अगर उसके ऊपर हमको अप्लाई करना है या कंक्लूजन बनाना है क्वालिटेटिव को भी क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा एंड देन वी हैव टू मेक फर्दर फ्यूचर कैलकुलेशंस बोलो समझ में आया in this connection we may note that a quantitative characteristic is known as a variable or in other words a variable is a measurable quantity again a variable may be either discrete or continuous ये सारी चीजें हम देख चुके हैं when a variable assumes a finite or a countably infinite number of isolated values, it is known as discrete variable. याद आ रहा है ना discrete random variable, continuous random variable, CRV and ARV उनके distributions, probability distributions. Examples of discrete variables may be found in the number of petals in a flower, the number of misprints contains, the number of road accidents in a particular locality, and so on. A variable on the other hand is known to be continuous if it can assume any value from a given interval. Examples of continuous variable may be provided by height, weight, sale, profit, and so on. Height can never be counted. It can always be measured to an approximation. जब मैं बोलता मेरी हाइट 5'6" है तो वो कभी भी 5'6" एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं है समझ में आ रहा है उसमें और डिटेलिंग में जाओगे तो इंचेस सेंटीमीटर्स मीटर्स मिलीमीटर्स और स्पेसिफिक जाते ही जा सकते हो सो it is always counted to an approximation and it can assume any value in between in between any two values समझ में आ रहा है वैसे weight and sales profits and so on finally a qualitative characteristic is known as an attribute so डेटा के उन्होंने दो हिस्सा किए एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव में दो वेरिएबल एंड सॉरी डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस और इसका नाम दे दिया एट्रीब्यूट बोलो समझ में तो इसका एक छोटा सा चार्ट बना लेंगे डेटा तो इससे क्वालिटेटिव जिसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट और क्वांटिटेटिव जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल वेरिएबल के दो टाइप्स डिस्क्रीट कंटीन्यूअस अगर डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस को मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं डेटा कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं और क्वांटिटेटिव डेटा को हम वेरिएबल बोलेंगे देखा तुमने इसके हेडिंग क्या दे दी तुमने दे दिया था क्या इस कलेक्शन में नहीं दिया ना अब हेडिंग फिर कलेक्शन ऑफ डेटा इसको कुछ हेडिंग में रैंडम पेज में चार्ट बना लिया या बिना हेडिंग तो टाइप ऑफ डेटा ऐसे दे सकते ठीक है चार्ट बनाया नेक्स्ट हेडिंग थी कलेक्शन ऑफ डेटा उसमें हम फर्दर लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट डेटा कैन बी कलेक्टेड थ्रू टू सोर्सेस डेटा कैन बी कलेक्टेड थ्रू टू सोर्सेस फर्स्ट लिखो प्राइमरी सोर्स एंड सेकंड लिखेंगे सेकेंडरी सोर्स प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स प्राइमरी सोर्स के ब्रैकेट में लिखेंगे collected by the analyst collected by the analyst himself or through his representative collected by the analyst himself or through his representative secondary source के ब्रैकेट में लिखेंगे collected from organizations
collected from organizations who have already collected the data. Collected from organizations who have already collected the data. समझ में? So हमारा सेकेंडरी यूज है. पहला उन्होंने कलेक्शन कर लिया, उनका उनका यूज कर लिया है. अब हम उनसे डेटा ले रहे हैं और हम उनके उस डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं. So हमारे लिए वो सेकेंडरी सोर्स हो गया. समझ में आया? क्लियर है? प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स. ठीक. नेक्स्ट हेडिंग को फिर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा. नेक्स्ट हेडिंग आएगा कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा. इन्होंने छोटा सा एक एग्जांपल दिया है प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स का. If Professor Das collects the data on the height of every student in his class, and these then these would be primary data for him. If, however, another person, say Professor Bhargava, uses the data as collected by Professor Das, so सबसे पहले डेटा किसने कलेक्ट किया? प्रोफेसर दास. हाइट सबकी मेजर की डेटा कलेक्ट किया, तो उसके लिए वो प्राइमरी डेटा है. However, then I प्रोफेसर भार्गवा, उनको भी हाइट पे डेटा चाहिए था, उन्होंने वापस मेजर नहीं किया. उन्होंने क्या किया? दास ने जो डेटा कलेक्ट किया वही डेटा यहाँ पे यूज कर लिया. बोले समझ में? तो उसके लिए वो सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि उसने खुद ने डेटा कलेक्ट किया. क्या किया? तो किससे किया? जिसने ऑलरेडी पहले डेटा डायरेक्टली स्टूडेंट से कलेक्ट किया हुआ था. क्लियर है? एनीस. अब कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा. फॉलोइंग मेथड्स आर एम्प्लॉयड फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा. चार अलग अलग मेथड्स दिए. सो मैं हेडिंग दिया ना कलेक्शन प्राइमरी डेटा, इसमें मेथड्स 4 मेथड्स ऐसे दो और नीचे चारों मेथड के नाम लिखो. इंटरव्यू मेथड, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, questionnaires filled and sent by enumerators. 4 मेथड्स दिए उन्होंने. ठीक है. सो 4 मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा. अगर हम खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने 4 मेथड्स दिए. पहला क्या है? इंटरव्यू मेथड. जहां जाके हर एक लोगों का इंटरव्यू लो और डेटा डायरेक्टली कलेक्ट करो, डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स. जो सोर्स है उस पे उनके पास हम डायरेक्टली जाएंगे, इंटरव्यू लेंगे, उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे. जैसे सेंसस का होता है, तो सेंसस फोर्थ मेथड है, बट होता इंटरव्यू ही है. अलग अलग लोगों के पास जाके क्वेश्चन पूछ पूछ के हम डेटा कलेक्ट करते हैं. दैट इज नथिंग बट इंटरव्यू मेथड. कोई फर्स्ट मेथड समझ में? एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिटेल में हम नीचे देखेंगे, बट कौन सी मेथड है समझ में? सेकंड मेथड, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड. और हर जगह पे जा जाके मैं डेटा तो कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा. मैंने क्या किया? एक क्वेश्चनर बनाया. क्वेश्चनर मतलब लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, उसको मेल कर दिया. नॉट जस्ट ईमेल, पोस्ट मेल भी हम कर सकते हैं. पोस्ट कर दिया या ईमेल कर दिया या जो भी है. बट इट हेल्प्स टू सेव टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक जगह पे खुद को जाना पड़ने वाला नहीं है. इट इज कॉस्ट फ्रेंडली. इट इज कॉस्ट फ्रेंडली. बस मुझे पोस्ट कर देना है. अलग अलग जगह पे ट्रैवलिंग कॉस्ट, अलग अलग लोगों को भेजना, उनकी सैलरी, ये सारी चीजें आने वाली नहीं है. सो इट इज टाइम सेविंग, इट इज कॉस्ट सेविंग. मेल क्वेश्चन है. हाउएवर रिस्पांस रेट कम रहेगा. सामने वाले ने रिस्पांस दिया, ऐसे नॉट नेसेसरी, क्योंकि मेल है ना, रिस्पांस नहीं दिया तो क्या?
इंटरव्यू में ऐसे नहीं होता, मैं खुद जाके अगर उसके साथ बात करो तो उसको कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। एकदम मुंह पे ना बोलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। कुछ आगे कोई पूछ रहा है तो कुछ ना कुछ तो जवाब देंगे। समझ पा रहा है? लेकिन मेल क्वेश्चन को इसी उनको थोड़ी रिप्लाई देना है। कितने सारे मेल्स तो हर रोज के आते रहते हैं हमको, हमारे को रिप्लाई दे देगा? ऐसे कोई अगर डेटा कलेक्ट करने के लिए मुझे कुछ मेल भेज रहा है तो मैं रिप्लाई करने वाला हूँ क्या? समझ पा रहा है? सो रिस्पॉन्स रेट इज वेरी लो एज कंपेयर टू इंटरव्यू मेथड। इसका रिस्पॉन्स रेट बहुत कम रहने वाला है। फर्दर सामने वाले को क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया तो भलता ही कुछ रिप्लाई दे दिया। कुछ कुछ और रहे हो, जवाब कुछ और ही मिल रहा है। इंटरव्यू में वैसे नहीं होता, अगर जवाब कुछ और दिया तो क्वेश्चन समझाएंगे, सामने वाले को क्वेश्चन हम समझाएंगे। इस यहाँ पे समझाएंगे कैसे? उनका रिस्पॉन्स आ गया वापस थोड़ी मेल भेजने वाले उसको। समझ में आ गया? सो इररिलेवेंट डेटा के आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, रिस्पॉन्स रेट कम होने के चांसेस भी ज्यादा है, बट इट इज कॉस्ट फ्रेंडली एंड टाइम कंज्यूमिंग। सो डिपेंड्स तुमको कितना प्रिसिजन पे डेटा कलेक्ट करना है, कितना खर्चा करने के लिए तुम तैयार हो, कितना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए तुम तैयार हो। समझ में आया क्या? थर्ड मेथड व्हिच इज ऑब्जर्वेशन मेथड। ना इंटरव्यू लेना है ना कोई क्वेश्चनर भेजना है, खुद जाओ, ऑब्जर्व करो, डेटा कलेक्ट करो। समझ में आया? दिस यूजुअली हैपेंस व्हेन डेटा शुड बी कॉन्फिडेंशियल। ऐसा नहीं कि कोई सामने वाला देखेगा ये क्यों पूछ रहा है, इससे इसको क्या फायदा है, चलो अपन भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, अपन भी पूछते हैं। कॉम्पिटिटर्स को कुछ बोलना नहीं है, ये सामने वाले को ऑफेंसिव फील होना नहीं चाहिए। हो सकता है किसी की डेथ हुई है, मुझे उसके ऊपर डेटा कलेक्ट करना है, मैं जा जाके पूछ रहा हूँ, नहीं जाएंगे मेरे को तो ठीक सच क्या है, जाओ ऑब्जर्व करो, जो भी डेटा तुमको कलेक्ट करना है ऑब्जर्व करो। मुझे ये डेटा चेक करना है कि कितने लोग होते हैं, कितने लोग दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है डेटा कितने लोग ग्रुप में है, उनके रिलेटेड मैं कुछ सॉल्यूशन देना चाहता हूँ कि वो जल्दी रिकवर कर सके। आजकल बिजनेस तो किसी भी चीज में खड़े हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? लोगों को सॉल्यूशन देना, लोगों को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन इज नथिंग बट बिजनेस। फिर वो प्रॉब्लम कोई भी छोटे से छोटा प्रॉब्लम क्यों ना हो। समझ पा रहे हैं? सो कभी कभी कोई कोई प्रॉब्लम हम पूछ नहीं सकते, हमको सिर्फ ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। समझ पा रहे हैं? So it is. Third is observation method. Fourth, question is filled and sent by enumerators. So it is similar to first interview method only. However, इंटरव्यू में मैं खुद जा जाके इंटरव्यू ले रहा था, बट मुझे इतना सारा एरिया कवर करना है कि हर जगह पे मैं जा नहीं सकता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ, एजेंट्स अपॉइंट करूंगा, उसको हम बोलते हैं एन्यूमरेटर्स। एन्यूमरेटर्स आर पीपल कलेक्ट डेटा ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन। समझ में आ रहा है? सो मैं एन्यूमरेटर्स भेजूंगा, उनको बोलूंगा, अच्छा उनको के लिए ट्रेनिंग होगी, पहले तो एन्यूमरेटर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन में हमको क्या रिस्पांस की रिक्वायरमेंट है, कोई सामने बंदा है कोई दूसरा आंसर दे तो क्वेश्चन को कैसे समझाना है, डेटा क्या कलेक्ट करना है उसको समझ में आना चाहिए, हाउ टू आस्क क्वेश्चन ये भी समझ में आना चाहिए, नहीं तो कभी भी गड़बड़ हो जाती है। माला वाली वीकली और शायद तुमको पहले भी शायद एग्जाम हो गया, एकदम फर्स्ट डे शायद जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था गेस्ट को, माला वाली वीकली में एक ऐसे सेंसस का एग्जांपल है। Parishkar is an agent of the government who is collecting data. तो ये करना चाहता है, पूछता है कि मेरे को याद है इतनी कोई जरूरत नहीं है। वीडियो ग्रुप में डाल देना बस, कनेक्ट करके दो और फिर प्ले करो। एग्जाम तो नहीं दिखा, उनको एग्जाम देनी नहीं देनी, कितने रास्ते के एग्जाम, क्या टाइम पास करेगी कोई। ये पहले करते तो ठीक है, मैं मान भी लेता, अभी क्या सिचुएशन है, 2 महीने में एग्जाम देनी तुमको और ये तुमको टाइम पास चाहिए, कुछ तो सीरियस बनो। तो रिवर्स सिनारियो होना चाहिए, मैं कुछ एग्जाम्पल तुमको दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ, तुमने बोला चाहिए सर जाने दो, बट पॉइंट पे आते हैं। हाँ तुम भी चलो आगे इंटरव्यू मेथड, एक एक डिटेल में देखेंगे अभी। इंटरव्यू मेथड कैन अगेन could be divided into
पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू। इंटरव्यू कैसे लिया जा सकता है? पर्सनली जाके, इनडायरेक्टली किसी और को बोल के, तीसरा टेलीफोनिक इंटरव्यू, फोन पे बात करके। सो तीनों टाइप ऑफ इंटरव्यूज हम देखेंगे, ध्यान देना। In personal interview method, the investigator meets the respondents directly and collects the required information then and there from them. So तब के तब information collect की जाएगी, investigator खुद जाएगा और data collect करेगा from the respondents. In case of natural calamity like a super cyclone or an earthquake or an epidemic like plague, we may collect the necessary data much more quickly and accurately by applying this method. ये application पे question आता है. In case of natural disaster, which method is the best method to collect data? Personal, indirect. So obviously we have to make a note of it. तुमने पहले चारों नाम लिख लिए हैं? फिर फर्स्ट हेडिंग दो इंटरव्यू मेथड, उसमें तीन पार्ट्स लिखो, पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू। लिखा पर्सनल, इनडायरेक्ट एंड टेलीफोन। उसमें फर्स्ट हेडिंग, फर्दर हेडिंग आएगा पर्सनल इंटरव्यू। इसमें लिखेंगे इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली कलेक्ट्स, investigator directly collects data from the respondents, from the respondents personally. Next arrow करके लिखेंगे, या next point इसी में, useful in case of natural calamities, useful in case of natural calamities. समझ में? Second है indirect. If there are some practical problems in reaching the respondents directly, हम वहां पे पहुंच नहीं पा रहे, as in the case of a rail accident, अब रेल एक्सीडेंट के बीच में हो जाएगा, वहां पे कनेक्टिविटी नहीं है, रेल ट्रैक्स तो बिटवीन सिटीज एंड बिटवीन टाउन्स, बीच में भी ऐसा एरिया रहता है जो पूरा वेकेंट है, वहां पे पहुंचने की दूसरी कोई जगह ही नहीं है। समझ में आ रहा है? सो हम जा जाके तो इंटरव्यू ले नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे? रेलवे में कोई मेरा इंसान कोई पहचान का अगर बैठा होगा, उसको ही बोलेंगे तू जा वहां पे इंटरव्यू कलेक्ट कर ले, मतलब डेटा कलेक्ट कर ले इंटरव्यू लेके, और उससे हम डेटा कलेक्ट करेंगे। और लोग तो ऐसे ही करते हैं, जो ऑलरेडी इंटरव्यू में बैठे, एक्सीडेंट हुआ, जाएंगे लोगों से डेटा कलेक्ट करेंगे, न्यूज वालों को फोन करेंगे मेरे पास डेटा है मुझे क्या। सो हम बोलते हैं रिपोर्टेड फिगर, इतने इंजर्ड है, इतने एक्टेड है, अब वो क्या खुद जाके कर ही नहीं पाएंगे। वो क्या करते हैं, इन्हीं लोगों से अलग अलग जो वहां पर ऑलरेडी लोग खड़े हैं, उन वही डेटा बेच देते हैं, दूसरों के रूप में पैसा कमा रहे हैं। हो रहा है वैसे, होता है वैसे, स्पेशली न्यूज वालों को तो ऐसे डेटा मिलता है। समझ में आ रहा है? एनीवेज, so in case if there are some practical problems in reaching the respondents directly, as in the case of rail accidents, then we may take recourse for conducting indirect interview where the investigator collects the necessary information from the persons associated with the problem. So वहाँ पे कोई लोग हैं तो उनसे हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे। समझ में आया? क्लियर है? कभी कभी इंडायरेक्ट इंटरव्यू में हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी इंसान के बारे में हमको डेटा कलेक्ट करना है, तो हम जाके डायरेक्टली उससे इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करते, उसके आजू बाजू वालों से करते हैं, स्पेशली नेबर्स। नेबर्स गिव द मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन। यस दे डू, बट ऑब्वियसली बेस मसाला लगा के मिलता है, वो हमको फिल्टर करके आना चाहिए। नेक्स्ट इज देखो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, इसको लिखेंगे when direct interview is not possible, when direct interview is not possible,
We may collect data. We may collect data from persons. We may collect data from persons directly associated with the problem. Person directly associated with the problem. एग्जाम्पल रेल एक्सीडेंट वगैरह याद रखो मतलब वो स्टोरी याद आ जाएगी एग्जाम्पल रेल एक्सीडेंट तीसरा टेलीफोनिक इंटरव्यू टेलीफोन इंटरव्यूज आजकल जो जॉब इंटरव्यूज पे टेलीफोन पे होते हैं क्योंकि इट बिकम्स इनकन्वीनियंट फॉर द पर्सन गिविंग द इंटरव्यू कि वो आए जगह पे फिर वहां पे आके इंटरव्यू लो फिर फाइनली सिलेक्ट नहीं हुआ तो फालतू में सारा पैसा भी खर्च हुआ वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी प्लस जो इंटरव्यू ले रहा है उसको भी एक्सेसिबिलिटी बहुत इजी हो जाता है वो कहीं से भी इंटरव्यू ले सकता है घर बैठे दूसरों का इंटरव्यू ले सकता है मीटिंग अरेंज की ऑनलाइन टेलीफोन पे ऑनलाइन मीटिंग आजकल टेलीफोन पे होता है नॉट इवन जूम मीटिंग टेलीफोन टेलीफोन पे अच्छा लगा फिर आगे जाके जूम मीटिंग होगी उसमें अच्छा लगा फिर पर्सनली बुलाएंगे मल्टीपल लेयर्स पहले बेसिक क्वेश्चन तो टेलीफोन पे पूछ लेते so yes, telephone interview method is a quick and rather non-expensive way to collect the primary data, where the relevant information can be gathered by the researcher himself by contacting the interview over the phone. क्रेडिट कार्ड कंपनी को बार बार फोन आते रहता है पर हम क्या करते हैं क्रेडिट कार्ड सुनते ही कट ठीक है मैं तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देता हूँ मुझे वो अच्छा नहीं लगता डायरेक्ट करता हूँ सिर्फ बोल देता मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है एटलीस्ट उतना बोल के कट करो पर ठीक है जो भी रिस्पॉन्स रेट इज अगेन लेस हम खुद नहीं ना वहाँ पे फोन किया सामने वाले के हाथ में कट कर देना रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं मिलेगा कोई को तो मस्ती में क्या क्या उल्टा सुनने लगे हाँ लोड चाहिए 10 करोड़ का रील्स तो मेरे की हो गया चलिए रील्स यहाँ पे भी देखोगे हर लोड बोलो वो भी लगाओ भी हमारे को भरोसा भरोसा नहीं रहा चलो टेलीफोन इंटरव्यू मेथड इज अ क्विक एंड रादर नॉन एक्सपेंसिव वे फटाक से नोट करते जाएंगे टेलीफोन इंटरव्यू हेडिंग को उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे क्विक एंड नॉन एक्सपेंसिव लेस एक्यूरेट सेकंड पॉइंट लेस एक्यूरेट पहले दोनों मेथड्स पर वो बिट मोर एक्यूरेट क्योंकि इंफॉर्मेशन हम खुद जाके पर्सनली ले रहे कलेक्ट तो रेलेवेंट भी होती है रिलायबल भी होती है प्लस रिस्पांस रेट भी ज्यादा मिलता है ये डेटा टेलीफोन के ऊपर कुछ भी मिल सकता है we cannot trust over the phone so less accurate but also the first two methods though more accurate are inapplicable for covering a large area हाँ covers a large area इसमें देखो covers a large area समझ में however next again point rate of non-response is high rate of non-response is high so interview method में देखा जाए तो most accurate कौन सी रहेगी consultative least accurate telephone most expensive पर्सनली हमको हर जगह जगह पे जा जाके टाइम और कॉस्ट इन्वेस्ट करना पड़ता है सो ऑब्वियसली अगेन मोस्ट एक्सपेंसिव इज पर्सनल लीस्ट एक्सपेंसिव विल बी टेलीफोन अगेन नॉन रिस्पांस का रेट सबसे ज्यादा किसमें टेलीफोन और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को दोनों में थोड़े से नॉन रिस्पांस के रेट कंपैरेटिवली लोअर रहेंगे नॉन रिस्पांस कम रहता है रिस्पांस को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है बोल समझ में नेक्स्ट अभी हम सेकंड मेथड पे जा रहे हैं फर्स्ट मेथड हमारा इंटरव्यू मेथड हो गया उसके तीन पार्ट्स हमने देख लिए पर्सनल इनडायरेक्ट एंड टेलीफोन अब सेकंड मेन हेडिंग आएगा मेल्ड क्वेश्चनर मेथड सेकंड मेथड मेल्ड क्वेश्चनर मेथड ठीक है लेट्स रीड मेल्ड क्वेश्चनर मेथड comprises of framing a well drafted and soundly sequenced questionnaire
covering all the important aspects of the problem under consideration and sending them to respondents with prepaid stamp after providing all the necessary guidelines for filling up the questionnaire. Prepaid stamp क्यों? सामने वाला खुद खर्चा करेगा क्या पे करने का? अब ये ईमेल की बात नहीं कर रहे, पोस्ट पे पोस्ट करने का, पोस्ट करना है तो स्टैम्प लगता है तुमको, चाहे क्यों ना 2 रुपए का क्यों ना हो, छोटा मेल होगा तो 2 रुपए का स्टैम्प लगता है, पर जो भी मेल का कुछ ना कुछ तो खर्चा आता है, सामने वाला करेगा क्या? हमको डेटा चाहिए, हम उनको क्वेश्चन भेज रहे, सामने वाला क्वेश्चन फिलअप करके तुमको पोस्ट करेगा और पोस्ट का खर्चा खुद उठाएगा क्या? इसलिए प्रीपेड स्टैम्प। प्रीपेड स्टैम्प मतलब क्या? ठीक है, मतलब जिसमें उसको रिस्पॉन्स भेजना है उसके ऊपर ऑलरेडी खर्चा पे किया हुआ प्रीपेड स्टैम्प हम डाल देंगे, तो सामने वाला पोस्ट ऑफिस वाला उससे पैसा कलेक्ट करने वाला नहीं है, उसको सिर्फ पोस्ट कर देना है। समझ में? सो प्रीपेड स्टैम्प देना नेसेसरी है। अगर मेल क्वेश्चनर है तो पहले हमको प्री प्लान्ड प्रॉपर फ्रेम्ड वेल ड्राफ्टेड क्वेश्चनर हमको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चनर इज द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, सो प्री प्लान्ड प्रॉपर ड्राफ्टेड क्वेश्चंस हमको बना के उनको मेल करना है और फिर वो उनका रिस्पांस देंगे, बट अगेन रेट ऑफ नॉन रिस्पांस विल बी हायर। छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेंगे, राइट डाउन। एडिट किया ना तुमने? सो फर्स्ट लिखो वेल ड्राफ्टेड एंड साउंडली सीक्वेंस्ड क्वेश्चनर, well drafted and soundly sequenced questionnaire. Second, prepaid stamps. Third, wide coverage. सिर्फ पोस्ट ही करना है घर बैठे, जितने जगह जाए उतने जगह पे हम पोस्ट कर सकते हैं। सो वाइड कवरेज, रेट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स इज हाई, ऐसे लिखो रेट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स इज मैक्सिमम इन दिस मेथड, रेट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स इज मैक्सिमम। बोलो समझ में? नेक्स्ट, थर्ड, ऑब्जर्वेशन मेथड। इन ऑब्जर्वेशन nuclear data are collected, as in the case of obtaining the data on the height and weight of a group of students by direct observation or using instrument. Although this is likely to be the best method for data collection, it is time consuming, laborious and covers only a small area. खुद हर जगह पे जा जाके ऑब्जर्व करना या कैलकुलेट करना या मेजर करके आना, ये सारी चीजों में बहुत टाइम और बहुत खर्चा लगता है। सो देयरफॉर ऑब्वियसली इसमें तो हम क्वेश्चन पूछ भी नहीं रहे, तुम्हारी हाइट कितनी है पूछ नहीं रहे, आगे हम मेजर करके जा रहे हैं। ऑब्जर्व करना मतलब उसको उसमें भी आता है, ऑब्जर्वेशन में ये भी आएगा कि हमने इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके एक्चुअल में ऑब्जर्व किया व्हाट इज द हाइट। वी आर नॉट आस्किंग दैट व्हाट इज योर हाइट, वी आर मतलब गोइंग देयर एंड कैलकुलेटिंग द हाइट बेसिकली, या मेजरिंग द हाइट। सो इसलिए यहाँ पे वो भी आया यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, हाइट के रिलेटेड एग्जांपल दिया, समझ में आया? सो ऑब्जर्वेशन में ऐसे नहीं कि हम जाके उनसे इंटरैक्ट नहीं कर सकते, इंटरैक्ट कर सकते बट हम उनको पूछ नहीं रहे, हम एक्चुअल में डेटा को ऑब्जर्व करके कलेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया? मतलब अभी हम उसको पूछेंगे कि दिन में तुम कितने बार एक्सरसाइज करते हो, सामने वाले ने बोला 2 बार, हमने ट्रस्ट कर दिया 2 बार लिख लिया, नहीं, हम जाएंगे वहां पे 5 दिन रहेंगे और एक्चुअल में चेक करेंगे कि वो एक्सरसाइज कितना करता है। दिस इज ऑब्जर्वेशनल। सो ऐसा ऐसे भी नहीं है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा और हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, पहला थॉट एक ऐसा आता है ना, वैसा नहीं। वी आर ऑब्जर्विंग एक्चुअल द फिगर्स, एक्चुअल डेटा जो हम वहां पे कलेक्ट करना चाहते हैं। समझ में? व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड यू ईट, तुमको पूछा तुम जंक फूड कितने बार खाते हो, तो हमारा आंसर हमेशा कम ही होता है, क्योंकि वी आल्सो डोंट रियलाइज कि हम कब कब बीच बीच में कुछ ना कुछ खा लेते हैं। समझ में आया? बट ये मैं अगर खुद ऑब्जर्व करूं, मेरा पर्पस ही वो है कि जंक फूड कितने बार खाते हो, तो मैं दिन भर में तुम बार बार चेक करूंगा तुम क्या क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। दैट इज ऑब्जर्वेशन। समझ में आया? कलेक्टिंग द डेटा, नॉट इवन बाय आस्किंग, बाय डायरेक्टली ऑब्जर्विंग। समझ में आया? सो ऑब्वियसली दिस इज द बेस्ट मेथड। इसमें कोई एक्चुअल में मैं खुद जाके मुझे जो डेटा कलेक्ट करना है ऑब्जर्वेशन आएगा, इसमें बायसनेस कुछ नहीं, मुझे डेटा चाहिए तो मैं डेटा कलेक्ट प्रॉपर्ली करूंगा ही। तुम खुद जब आंसर दे रहे हो तो बायसनेस आ सकता है, हो सकता है तुम बोलोगे नहीं नहीं मैं तो महीने में 1 बार बाहर खाना खाता हूँ। बोले कौन बोलेंगे?
बोलो समझ में आया? देयर मे बी सम अदर रीजंस टू हाइड आल्सो। बाहर खा रहे हो नहीं खा रहे हो, किसके साथ खा रहे हो, ये ना समझे इसलिए रिस्पॉन्स में भी पॉइंट बी एक्चुअल रिस्पॉन्स परफेक्ट रिस्पॉन्स मिल नहीं सकता। बट अगर मैं अगर तुम्हारे ऊपर नजर रखूं कौन कहाँ जा रहा है, किसके इंस्टाग्राम पोस्ट पे कौन दिख रहा है, कौन कमेंट कर रहा है, पॉइंट बी collecting the data not even by asking, by not asking but directly observing। समझ में आया? This is observation method, so obviously it is the best method क्योंकि most accurate इसमें data information मिलेगा, but too much time will be consumed, too much efforts will be consumed, too much cost will also be required। समझ में आया? So yes, right now heading दिया तुमने, so इसमें एकदम शॉर्ट में मैं दूंगा एक्सप्लेनेशन लिखा रहा हूँ। Don't even ask, directly observe। Don't even ask, directly observe। Example, don't ask for the height of a person, don't ask for the height of the person, rather directly measure the height of a person। बायोडेटा में आता है ना, हाइट्स लिखी हुई रहती है, यूजुअली फॉल्स रहती है, इंफ्लेट की हुई रहती है सारे, लड़कियों की नहीं भी ज्यादा, सो फॉर एक्सपीरियंस। मैंने थोड़ा बायोडेटा देखे मेरे लिए देखे हुए मतलब भैया ने बहुत सारे देखे हुए, तो मैं भी देखता ही था ना ऑब्वियसली। ऐसे लाए और ठीक क्या ही करूँगा, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन करूँगा। बेस्ट मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, best method of collection of data as it is most accurate। However, it consumes a lot of time, efforts, and cost। However, it consumes a lot of time, efforts, and cost। Also, coverage is low। Also, coverage is low। कितने लोगों को ऑब्जर्व करो ना, हर रोज कौन कितना जंक फूड खा रहा है देखने के लिए अगर मुझे हर रोज का एक एक दिन एक एक इंसान को देना पड़े तो ऐसे कितने लोगों को मैं ऑब्जर्व करूंगा, समझ में आ रहा है? So obviously coverage will be low। Next fourth questionnaires through enumerators। क्या था वो रेडी तूने कैसे दिया था? Questionnaires filled and sent by enumerators। पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे enumerators। Enumerators are persons who collect data on behalf of the investigator। Enumerators are persons who collect data, enumerators are persons who collect data on behalf of the investigator। Again, second point is वही आएगा, well drafted and soundly sequenced questionnaire should be prepared। Well drafted and soundly sequenced questionnaire should be prepared। Soundly sequenced मतलब वही, again coming back to our Malamal weekly example जो मतलब दिया नहीं, सीन ऐसे ही कुछ है कि शायद वो जाता है पहले एक घर में डेटा कलेक्ट करने के लिए, पहले पूछेगा कि नहीं, पहले पूछेगा बच्चे है क्या, बोलेगा यस, तो फिर पूछेगा बच्चे है क्या, सॉरी शादी हुई है,
पहले बच्चों के बारे में पूछेगा, आंसर यस आया तो ऑब्वियसली शादी के बारे में पूछना नहीं चाहिए। साउंडली सीक्वेंस होना चाहिए एक दो क्वेश्चन, और प्लस उनको ट्रेनिंग देना चाहिए कि थ्री सिनेरियोस क्या क्या हो सकता है और तुमने कैसे डील करना चाहिए। बट उसने वो सीन ऐसे लिखा है कि वो पहले पूछता है कि बच्चा है क्या, तो आंसर आता है यस, और फिर पूछता है कि शादी हुई है क्या, तो अगेन चापड़ यस, और दूसरे घर में जाता है फिर उल्टा पूछता है शादी हुई है क्या, तो बोलते नहीं बच्चे है, तभी भी टप्पड़। सो सिर्फ सीक्वेंसिंग प्रॉपर नहीं, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। समझ में आया? सो नेक्स्ट पॉइंट वही रहेगा, enumerator should be properly trained. Enumerator should be properly trained and explained the purpose of collection of data. The purpose of collection of data. Next, costly method, wide coverage. Since agents को मैं भेज रहा हूँ तो ज्यादा एरिया में कवर कर पाता हूँ, खुद जा जाके डेटा कवर देख मतलब ज्यादा एरिया कवर नहीं कर पाता, बट एनुमरेटर्स को भेज रहे तो ज्यादा लोगों से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, बट इट इज ऑब्वियसली कॉस्टली ऑल्सो, सो कॉस्टली मेथड बट वाइड कवरेज। ठीक, ये हो गए हमारे चार मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, जो हम डायरेक्टली कलेक्ट कर रहे हैं हम खुद या हमारे एजेंट्स के थ्रू। बोलो समझ में आया? सेकंड लिखेंगे सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी, सेकंड मतलब नेक्स्ट हेडिंग आएगा सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। ये ऐसे कैसे लिख लेना है? इंटरनेशनल सोर्सेस लाइक WHO, ILO, IMF, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। Government sources like statistical abstract by CSO, अच्छा CSO is the one who conducts the census, उसका नाम ही वो है ना, क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। Indian agricultural statistics by the Ministry of Food and Agriculture and so on. So international sources, government sources, private and quasi government sources like ISI, ICAR, NCRD, etc. Which come under the rules of government but directly not handled by the government, quasi government. And fourth, unpublished sources of various research institutes, researchers, etc. Unpublished sources of various research institutes, researchers, etc. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के पास भी बहुत सारा डेटा होता है, बिकॉज देखो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स, थीसिस पेपर्स, बहुत सारे लोग आके इंस्टीट्यूशंस को सबमिट करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, और उन्होंने सपोर्ट किया तो फिर वो पब्लिश किया जाता है। There are many research papers which are submitted to educational institutes. वो research paper में बहुत सारे डेटा एक्चुअल में वो लोगों ने कलेक्ट किया हुआ रहता है। Sometimes they get published, sometimes they don't get published. पर डेटा तो अवेलेबल होता है, उनसे जाके वो डेटा डायरेक्टली ले सकते हैं। ठीक है, हुआ? चलो हुआ क्या? ये फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हुई, विच इज कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें हमने प्राइमरी भी देखा,
सेकेंडरी भी देखा, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के अलग अलग मेथड्स देखे, मेन 4 मेथड्स और 4 फर्स्ट मेथड के अंदर और 3 मेथड, इंटरव्यू, सेकेंड वाज मेन क्वेश्चन है, थर्ड वाज ऑब्जर्वेशन एंड फोर्थ वाज थ्रू एनुमरेटर्स। ठीक है, सेकेंड मेथड इज स्क्रूटिनी ऑफ डेटा, जो मैंने बोला था सॉर्टिंग ऑफ डेटा, जो रेलेवेंट है वही रखो, जो इररेलेवेंट है वो हटा दो, जो रिलायबल है वही रखो, जो इररिलायबल है अनरिलायबल है वो हटा दो, एंड सो ऑन सो। देखो इसमें क्या दिया है, this is the second step of statistics, which is scrutiny of data. Since the statistical analysis are made only on the basis of data, it is necessary to check whether the data under consideration are accurate as well as consistent. Consistent होना चाहिए। No hard and fast rules can be recommended for the scrutiny of data. One must apply his intelligence, patience, and experience while scrutinizing the given information. Errors in data may creep in while writing or copying the answer on the part of the enumerator. डेटा कलेक्ट तो किया था प्रॉपर्ली, लेकिन फॉर्म से एक्सेल शीट में टाइप कर दो, गड़बड़ हो गई, टाइपिंग एरर्स। फुल समझ में आ रहा है? A keen observer can easily detect that type of error. Again, मतलब मोबाइल नंबर 11 डिजिट का है तो ऑब्वियसली समझ में आ जाना चाहिए, कुछ गलत है। Again, there may be 2 or more series of figures which are in some way or other related to each other. The data for all the series are provided. They may be checked for internal inconsistency. As an example, if the data for population area and density for some places are given, then we may verify whether they are internally consistent by examining whether the relation density equal to population of one area holds. तो हमने population का भी एरिया लिया है, मतलब population का भी डेटा लिया है, एरिया का भी डेटा लिया है, तो ऑब्वियसली एक कैलकुलेशन हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, उसने जो डेंसिटी के फिगर्स लिखे क्या वो मैच हो रही है या नहीं। समझ में आ रहा है? We can immediately cross check. A good statistician can also detect whether the returns submitted by some enumerators are exactly of the same type, thereby implying the lack of seriousness on the part of enumerators. मतलब हो सकता है कि एनुमरेटर्स को टारगेट दिया था कि तू 100 लोगों से डेटा लेके आना, हमने वो ऑब्जर्व किया, उसने जो सारे रिस्पॉन्सेस लाए सब में सिमिलर डेटा दिख के आ रहा है, देयर इज अ सिमिलर पैटर्न ऑफ राइटिंग द सॉल्यूशंस। समझ में आएगा कि अलग अलग लोगों से नहीं, खुद ने अकेले ने लिखे हुए डेटा है। सो यू शुड बी कीन ऑब्जर्वर फॉर दैट। समझ में आ रहा है? The bias of the enumerator also may be reflected by the return submitted by him. Enumerator का भी bias आ सकता है, सामने वाले ने रिस्पॉन्स कुछ अलग दिया है लेकिन लिखते वक्त उसने इस तरीके से फ्रेम किया कि बराबर से कुछ और ही इंटरप्रिटेशन निकले। सो बायसनेस ऑफ एनुमरेटर्स भी आ सकता है, या फिर हो सकता है कि उसने कोई डेटा दिया ही नहीं मुझे। समझ में आ रहा है? उसने 100 लोगों का कलेक्ट किया, वो बोलेगा 80 लोगों का कलेक्ट किया और ये लोग 80 लोगों का रिस्पॉन्स, वही रिस्पॉन्स दिया जो उसके लिए फेवरेबल हो, अनफेवरेबल रिस्पॉन्सेज उसने दिए नहीं। बोलो समझ में आया? सो ये सारी चीजें हम बाय ऑब्जर्वेशंस एंड ऑब्वियसली द एक्सपीरियंस हमको समझ में आ सकता है। This type of error can be rectified by asking the enumerator to collect the data for the disputed cases once again. तो एक काम कर, ये मुझे कुछ रिस्पॉन्स गलत लग रहा है, तू जा इसके पास और वापस डेटा कलेक्ट कर। समझ में? बार बार अगर उसको करना पड़े तो वो भी फिर जो एक्चुअल डेटा है वही देगा। इसको समझ में आ रहा है कि ये मेरी मिस्टेक या मेरा जो मैं कर रहा हूँ वो समझ में इसका आ रहा है, तो he won't do it once again. समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका कुछ ज्यादा लिख नहीं सकते। ठीक है, चलो स्क्रूटिनी ऑफ डेटा उसमें लिखो, सॉर्टिंग आउट द इररिलेवेंट डेटा एंड अनरिलायबल डेटा, सॉर्टिंग आउट द irrelevant and unreliable data, checking for bias of enumerators, checking for bias of enumerators, checking of bias of enumerators, cross verifying the data for internal inconsistency, cross verifying the data for internal inconsistency। कि टेस्ट है 100 मार्क की, किसी को मिले 60 मार्क्स और परसेंटेज में लिखे 80%, ये इंटरनल इनकंसिस्टेंसी हो गई।
your data itself is not matching with your information. समझ में आ रहा है? ये इंटरनल इनकंसिस्टेंसी होगी. जैसे यहाँ पे डेंसिटी का एग्जांपल लिया, तुमने पॉपुलेशन वाली फिगर भी लिया, एरिया वाली फिगर भी ली. डेंसिटी इज व्हाट? पॉपुलेशन अपॉन एरिया. वो मैच ही नहीं हो रहा है तुम्हारा. समझ में आया? सो ये इंटरनल इनकंसिस्टेंसी हम इमीडिएटली निकाल सकते हैं. समझ में आया? जैसे तुमको मैं क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मीडियन का कैलकुलेशन याद आ रहा है? हम मीडियन क्लास ढूंढते हैं 200 to 400 लेट्स से ढूंढा, और तुम्हारा आंसर आ रहा है 500 एंड समथिंग. तो मैं बिना देखे भी तुमको आंसर बोल सकता हूँ कि नहीं तुम्हारा आंसर गलत है. इंटरनल इनकंसिस्टेंसी. क्योंकि मैंने तुमको पहले ये पूछा लेट्स से कि मीडियन क्लास कौन सा है, तुमने बोला 200 to 400 और आंसर पूछा तो आंसर बोलते हो 500 एंड समथिंग बोल रहे हो. इसलिए इंटरनल इनकंसिस्टेंसी. समझ में आ रहा है कि आंसर होना चाहिए 200 to 400 के बीच में, क्योंकि मीडियन क्लास का तुमने वो मार्क किया है और आंसर आ रहा है 400 के ऊपर, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. सो एक तो कैलकुलेशन एरर है, या फिर तुमने मीडियन क्लास ही गलत मार्क किया है, एंड ऑल एंड ऑल अलग अलग मिस्टेक्स उसमें हो सकते हैं. बट यू कैन क्विकली वेरीफाई दैट योर आंसर इज रॉन्ग. समझ में आ रहा है? ठीक है, दैट्स इट. First step, which is presentation of data. Step 3, presentation of data. Step 1 था हमारा collection of data. Step 2, scrutiny of data. Step 3, presentation of data. अब जो रेलेवेंट डेटा है वो हमने सारा रख दिया है, इररेलेवेंट हटा दिया. जो डेटा है वो करेक्ट है. अब इस डेटा को हमको प्रेजेंट करना है. ये एक्चुअली फोर्थ स्टेप है. फर्स्ट स्टेप ये आती है बीच में, क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. तो फिर ये दिया ना हेडिंग होगी, ठीक है, उसी के अंदर फिर क्लासिफिकेशन जैसे इन्होंने दिया वैसे उसी के अंदर हम लिखेंगे. Once the data are collected and verified for their homogeneity and consistency, we need to present them in a neat and condensed form, highlighting the essential features of the data. Any statistical analysis is dependent on a proper presentation of the data under consideration. टेबल दोगे तो फटाफट से कैलकुलेशन होगा, पैराग्राफ फॉर्म में दोगे तो हमको टेबल बनाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर कैलकुलेशन होगा. समझ में आ रहा है? सो जितना बेटर प्रेजेंटेशन उतने जल्दी फटाफट से एनालिसिस हो सकता है. Classification or organization of data. It may be defined as the process of arranging data on the basis of characteristic under consideration into a number of groups, classes, according to the similarities of the observations. Following are the objectives of classification of data. It puts the data in a neat, precise and condensed form so that it is easily understood and interpreted. वही प्रॉपर वे में हमको डेटा को क्लासिफाई अगर हमने कर लिया तो फटाफट से इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं. और ऑलरेडी उस डेटा को हमने अलग अलग क्लास में डिवाइड करने की वजह से इंफॉर्मेशन हैज ऑलरेडी बिकम मोर सेंस. इट मेक्स मोर सेंस टू यूज दैट डेटा कि अलग अलग एज वाइज अगर हमने डेटा निकाला है वहां से हम पैटर्न ढूंढ सकते हैं कि हाँ इस एज वालों का लेट्स से रिपोर्ट कुछ अलग है और इस एज वालों का रिपोर्ट कुछ और अलग है. सो इमीडिएटली देख के भी हमको काफी सारे कंक्लूजन मिल जाते हैं. सो नीट, प्रिसाइज एंड कंडेंस्ड फॉर्म में अगर डेटा को हमने प्रेजेंट किया तो इट इज इजीली अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेटेड. It makes comparison possible between various characteristics if necessary and thereby finding the association or the lack of it between them. Food choices, let's say. तो youngsters का जंक फूड की तरफ रहेगा, obviously senior citizens का it will be more towards healthier food, healthy lifestyle. समझ पा रहे हैं? So we can easily relate this. C. Statistical analysis is possible only for the classified data. यस, क्लासिफाई किया हुआ है डेटा तो ही स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम आगे कर पाएंगे और बेटर तरीके से कर पाएंगे. इट एलिमिनेट्स अननेसेसरी डिटेल्स एंड मेक्स डेटा मोर रेडिली अंडरस्टैंडेबल. वही पैराग्राफ फॉर्म में पूरी स्टोरी महाभारत लिखी हुई है बट उसमें से जो रेलेवेंट है वही हम टेबल में लिख लेते हैं. समझ पाएंगे? एनीस थोड़ा इसका नोट कर लेंगे. प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा तुमने हेडिंग किया, उसके अंदर फर्दर हेडिंग दो क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. Data can be classified and arranged.
Data can be classified and arranged on the basis of common characteristics. On the basis of common characteristic. In a neat, precise, and condensed form. In a neat, precise, and condensed form. नीचे लिखेंगे easily understood and interpreted. Easily understood and interpreted. Makes comparison possible. Makes comparison possible. Makes further analysis possible. Makes further analysis possible. Eliminates unnecessary details. Eliminates unnecessary details. ठीक है. नेक्स्ट ये पॉइंट ऐसे कैसे लिखना है. Data may be classified as chronological or temporal or time series data. ये एक बार एग्जाम में आया था. वर्ड दिया था टेम्पोरल, किसी को सब याद ही नहीं रहा क्योंकि इट इज नॉट इजीली अंडरस्टूड. बहुत सारे लोगों ने याद रॉन्ग किया, बहुत सारे लोगों को याद नहीं था, वैसे नहीं कि किसी को भी याद था. बट वेरी कॉमन मिस्टेक जो उस पेपर में हुई थी. क्वेश्चन ही वही था कि when data is arranged as per the time of occurrence, what type of data is it? तो टेम्पोरल का ऑप्शन में दिया था, क्रोनोलॉजिकल नहीं दिया. क्रोनोलॉजिकल सबको पता है तो इसलिए वो अवॉइड हो जाता है. हाँ क्रोनोलॉजिकल पता है, वर्ड पे फोकस जाता है नहीं कि टेम्पोरल का भी मीनिंग वही. ऑप्शन में टेम्पोरल आया तो किसी के ध्यान में नहीं आया. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. So first is chronological or temporal or time series data. Second, geographical or spatial series data. Third, qualitative or ordinal data. Fourth, quantitative or cardinal data. Ordinal is basically जहाँ पे numbers assign किए जाते हैं, ranking दिया जाता है. That type of data is ordinal data which is used for qualitative information. Quantitative हो तो उसका directly counting measuring हो सकता है. That is quantitative data. Cardinal. अभी हमने सेट्स में किया ना cardinal number of set. Because we can count the number of elements. इसलिए वो cardinal data है. We are not giving ranking or anything. Arrange नहीं किया जा रहा data. ठीक है. Anyways, चारों लिखे. आगे बढ़ते हैं. When the data are classified in respect of successive time points or intervals, they are known as time series data. बस यही था क्वेश्चन. When the data are classified in respect of successive time points or intervals, they are known as. क्वेश्चन में ना टाइम सीरीज डेटा था, मतलब ऑप्शन में ना टाइम सीरीज डेटा दिया था, ना ज्योग्राफिकल दिया था, ना क्रोनोलॉजिकल दिया था, ऑप्शन में टेम्पोरल दिया था. बट वो समझ में आना चाहिए. Hence, the number of students appeared for CA final for the last 20 years, the production of a factory per month from 2000 to 2015, etc. are examples of time series data. So time के chronology के हिसाब से हम डेटा को कलेक्ट करने जा रहे हैं. Data arranged region wise are known as geographical data. If you arrange the students appeared for CA final in the year 2015 in accordance with different states, then we come across geographical data, also known as spatial data. Data classified in respect of an attribute are referred to as qualitative data. Data on nationality, gender, smoking habit of a group of individuals are examples of qualitative data.
Lastly, when the data are classified in respect of a variable, say height, weight, profit, salaries, etc., they are known as quantitative data. So I'm not making you write anything out of this, but I hope you understand. Simple point again. Data may be further classified as frequency data and non-frequency data. The qualitative data as well as quantitative data belong to the frequency group, whereas time series data and geographical data belong to the non-frequency group. समझ पा रहे हैं? फर्दर उसके फ्रीक्वेंसी काउंट नहीं कर सकते कितने लोग कितने ये वो पूरा नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा है और ये फ्रीक्वेंसी डेटा है सो अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ये हमारा एक्चुअल फोर्थ पॉइंट है एनीवेज हमने थर्ड पॉइंट पे हेडिंग प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दिया है इसका फर्दर सब हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग आएगा मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इसमें फर्स्ट आएगा मैं तीनों नाम लिखना है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन सेकंड टैबुलर प्रेजेंटेशन एंड थर्ड डायग्रामेटिक या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हुआ क्या ठीक है एक एक को अभी डिटेल में देखिए थोड़ा फास्ट रीड करेंगे ध्यान दो textual presentation this method comprises presenting data with the help of a paragraph or a number of paragraphs the official report of an inquiry commission is usually made by textual presentation following is an example of textual presentation in 2009 out of total 5000 workers of raw animal factory 4200 were members of a trade union. The number of female workers was 20% of the total workers, out of which 30% were members of the trade union. इसका एक छोटा सा टेबल हम बना सकते हैं दो कैटेगरीज बनाएंगे मेल फीमेल ट्रेड यूनियन नॉट अ मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन मतलब मेंबर नॉट अ मेंबर और फिर ग्रैंड टोटल टोटल वर्कर्स आ सकते हैं सो एक टेबल में सारी इंफॉर्मेशन फास्ट आ सकती है बट यहाँ पे पूरा पैराग्राफ फॉर्म में दिया है परसेंटेजेस दिए हैं एंड एवरीथिंग in 2010 the number of workers belonging to the trade union was increased by 20% as compared to 2009 of which 4,200 were male. The number of workers not belonging to trade union was 950, of which 450 were females. अच्छा 950 so वैसे ठीक है workers not belonging to trade union was 950, of which 450 were females. समझ में आ रहा है टेबल सिंपल member not member and male and female. The merit of this mode of presentation lies in its simplicity, and even a layman can present data by this method. The observations with exact magnitude can be presented with the help of textual presentation. Furthermore, this type of presentation can be taken as the first step towards the other methods of presentation. पहले textual format में present करो, फिर वो text को table में convert करो. Textual presentation, however, is not preferred by a statistician simply because it is dull, monotonous, and comparison between different observations is not possible in this method. For manifold classification, this method cannot be recommended. बोल समझ में आया? चलो शॉर्ट में लिखेंगे. हेडिंग दिया है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. तो हेडिंग टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. So first point, use of paragraphs. Use of paragraphs. Simple to present. Simple to present. Detailed information. Detailed information. Next, however, it is dull, monotonous, and comparison is not possible. However, it is dull, monotonous, and comparison is not possible.
समझा? And last point, this type of presentation, this type of presentation can be taken as the first step. This form of presentation can be taken as first step towards other forms of presentation. Can be taken as first step towards other form of presentation. Why other? Second, tabular presentation. इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं tabular presentation में. उसमें फर्स्ट वन लिखो, यूज ऑफ रोज एंड कॉलम्स. यूज ऑफ रोज एंड कॉलम्स. सेकंड पॉइंट में रेफरेंस नंबर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड फुटनोट्स. रेफरेंस नंबर, ये सारी चीजें. रेफरेंस नंबर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड फुटनोट्स. वो लिखे. नेक्स्ट, guidelines for tabulation. And you know, guidelines for tabulation. Guidelines for tabulation. So first लिखेंगे serial number with a self-explanatory title. टेबल बनाने के गाइडलाइंस हम देखते हैं. पहला क्या है, हमारे टेबल को एक सीरियल नंबर होना चाहिए और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक टाइटल होना चाहिए. देखा. सेकंड लिखो, divided into caption, box head, stub and body. Divided into caption, box head, stub and body. Divided into caption, box head, stub and body. एक एक चीज क्या क्या है वो लिखते जाएंगे. जैसे कैप्शन क्या है, स्टब क्या है, बॉडी क्या है, बॉक्स हेड क्या रहेगा, ये सारी चीजें हम लिखते जाएंगे. नीचे मतलब इसी पॉइंट में नीचे कैप्शन लिखो, एरो करके लिखो. अपर पार्ट डिस्क्राइबिंग द कॉलम्स एंड सब कॉलम्स. लिखा. फिर लिखो बॉक्स हेड, एंटायर अपर पार्ट, एंटायर अपर पार्ट which contains columns, entire upper part which contains columns and sub column numbers. हर कॉलम को भी हम नंबर लिखेंगे. कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, which contains columns and sub column numbers. Unit of measurement along with caption. Unit of measurement along with caption. So caption is a part of box set. Box set में सब कुछ आता है. Caption भी आता है. कॉलम सब कॉलम के नंबर्स आएंगे. एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जैसे हम लिखते हैं अमाउंट इन रुपीस वगैरह, इन थाउजेंड्स, इन लैक्स, इन डॉलर्स, ये सारी चीजें यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे हम इसमें इंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट लिखो स्टब. थर्ड लिखेंगे स्टब. इसमें मतलब left part of the table, left part of the table describing the rows.
main part of left part of the table describing the rows. फिर लिखो body last body main part of the table that contains numerical figures. Main part of the table that contains numerical figures. ये हमारी सेकंड गाइडलाइन कंप्लीट है. फर्स्ट गाइडलाइन क्या थी? रेफरेंस नंबर और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल ये होना चाहिए. दूसरा हमने देखा टेबल शुड बी डिवाइडेड इन प्रॉपर फोर पार्ट्स. कॉलम सब कॉलम्स इनकी हेडिंग इनका डिस्क्रिप्शन देने वाला कैप्शन. फिर बॉक्स सेट उसमें फिर सारे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कॉलम नंबर्स कॉलम के सब कॉलम्स और उसके नंबर्स. देन हमने देखा स्टम और रोज का डिस्क्रिप्शन. एंड देन हमने देखा मेन बॉडी पार्ट जहां पे मेन सारे फिगर्स रहेंगे. समझ में आया? थर्ड गाइडलाइन well balanced in length and breadth. Well balanced in length and breadth. Both arranged in such a way. Arranged in such a way. Arranged in such a way that easy comparison between different figures. Arranged in such a way that easy comparison between different figures. Swipe you. हाँ तो क्या सुनना नहीं है. ऐसा आंखें लाल हो गई. सुनता हूँ जरा वो क्या क्या बोला? Arrange the data in such a way that easy comparison between different figures is possible. Easy comparison between figures is possible. Row totals and column totals. Easy one. Row totals and column totals should be shown. Row totals and column totals should be shown. Fifth, appealing to the eyes. Appealing to the eyes. Each में नहीं दिखना चाहिए. Present ठीक से करो, arrange ठीक से करो. Appealing to the eyes. Sixth, last point. Notes describing the source of data. Notes describing the source of data. Footnotes. Footnotes regarding any columns or subcolumns. Bottom part of the table. ये कहाँ पे आएगा? Bottom part of the table वाले टेबल के बाद टेबल के नीचे footnotes हम लिख के रख सकते हैं. कभी कभी क्या होता है कॉलम के हेडिंग में डिटेल में लिख भी नहीं पाऊंगा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं. TU व्हाट इज TU नीचे लिखेंगे टोटल यूटिलिटी. समझ में आया? सो ऐसे हम कई बार कॉलम के हेडिंग शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं उसका फुल प्रॉपर डिटेल डिस्क्रिप्शन हम नीचे लिखते हैं. समझ में आया? दैट इज फुटनोट्स. समझ में आया क्या? देखो ऊपर जो पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी थी वही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है. 2009 2010 मेंबर ऑफ टीयू नॉन मेंबर इसमें मेल फीमेल टोटल एंड टोटल दिस होल डेटा. समझ में आया? फुटनोट में टीयू एम एफ एंड टी स्टैंड फॉर ट्रेड यूनियन मेल फीमेल एंड टोटल रिस्पेक्टिवली. सो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में टेबल की हेडिंग्स दी हुई है कॉलम की हेडिंग्स तो यहाँ पे उन्होंने फुटनोट में नीचे लिख लिया. समझ में आया? This is a sample table. ऐसे तो हमने बहुत सारे टेबल देखे. ठीक है. Tabulation method is usually preferred to textual presentation as comparison
easily possible है. Complicated data can also be presented using calculation. It is a must for diagrammatic representation. पहले diagram बनाने से पहले table तो बनाना ही पड़ेगा, तो ही ग्राफ बना पाओगे. And without tabulation, statistical analysis of data is not possible. Statistical analysis में जितने भी क्वेश्चंस थे हर जगह पे टेबल दिया रहता है. टेबल उसी के ऊपर फिर उसी के ऊपर हम कैलकुलेशंस करते हैं. ठीक है. We'll stop here. एक last point बाकी हमारा diagrammatic representation. Simple है. ठीक है अगली बट इजी पॉइंट्स मतलब डायरेक्टली क्वेश्चंस को बनाया तो आंसर करते हैं आसानी तो यू कैन राइट